is Varinder from Sargam TV and U24 Live. ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਵੀਟੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਮਾਣਾ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਸਵੀਟੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਗਾਉਣ ਦਾ Well I should say it's in genes you know and it's been my passion from the childhood to sing and I'm more into like Urdu dialect as well as Punjabi singing and as I grew up you know I had this passion and I continued singing and it's my pleasure to be here to support Global Women Organization and to bring beautiful Punjabi songs and which I'm really enjoying I mean, there are no words to say to join this event and try to do my best. And Sridhi ji, as I know, like this is a new trend. Before we was celebrating only like boys Lohri, but it's a new trend. We are now celebrating girls Lohri. How you feel that? Well, I feel great about it because I think girls who I call princes, little princesses, they are very important in our lives and especially to mothers, girls are of great importance and they should be given equal, what I can say, pride and acceptance. That's what it is. Thank you ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ Well it's my pleasure to sing today beautiful songs like Kameez Teri Kali ਨੀ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ and secondly ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਮੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਗੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ song ਹੈ which I'm going to sing otherwise I'm really you know glad to introduce a new song which I composed myself ढोलना ढोलना तकदियां रा ढोलना wow yes it is composed of yourself yes I wrote it and give lyrics as well as the tune tempo to the song. Oh, that's wonderful. So we are very lucky today. We have an opportunity to listen Sweetie Singh's new song composed by her, written by her, and it is a wonderful task. Thank you. Thank you so much, Varinder ji, and I wish you good luck. Thank you. Having pleasure to have Mr. Raj Salwan, Dr. Raj Salwan ji, who is a city council member too from Fremont. Welcome and happy Lohri ji. Happy Lohri, pleasure to be here, Vinderji. Thank you and welcome to the show and first of all I want to ask you, I'm trying to catch you a long time ago and congratulations to be a city councilman also Fremont. Sir, tell us about Lohri movement a little bit, what do you understand? Well, Lohri is a great celebration. It's a cultural festival and so my family is Punjabi so Lohri is a big time so especially the first Lohri of a son that's a big thing so congratulations. Yes And go ahead. Well, I'm just excited that you know the community was able to elect me and support me in this last election, and so it's a win not only for me but also for the community. Yeah. And now it's a very good thing you are already elected. What is your next plan for the Fremont side? So I think we have four big things. One is we want to take care of the traffic issues. We have a lot of traffic congestion in Fremont. We want to improve our schools, make sure we have good schools for our kids. We want to make Fremont safer. We have a lot of crime. So now, you know, it's increasing all the time. So I want to add more police officers. And last but not least, I want to make sure that Fremont is a great city with a high quality life for everyone. And we have good businesses and good restaurants. And one is like a very personal question. And because you are yourself is Punjabi, do you have any idea like how we recognize more Punjabi community in our all the communities? Well, I think the Punjabi community has been here for a long time, but I think we need to be involved. We need all of our community members to be out in events and you know represent. And so I think when I came here, it was all Punjabis, but now we have communities from all over, you know. And so I think the Punjabis have become complacent, and they feel like, oh, we've already done it, we've already been here. So they're not as excited and they're not going out as much. So we need to reinvigorate and get the Punjabi community out there.
And we are very fortunate as you are being a Punjabi elected council city man. And what I'm thinking is there is a lot of hate crime for our Indians, especially Punjabis, because we wear turban. That's right. What you can do for that? So, I've been working on this issue for about 10 years. I was one of the first guys to do community forums so that we would say, hey, look, there's this 9/11, but look at our Sikh brothers are going through this, they're being targeted. And so we raised awareness and it made a big difference. And anytime there's any hate crime, I take a very strong stand and I make sure we get the police chief and get all of our community together and make sure that we don't have any hate crime in this area. And we support our Sikh brothers and all of our Indian community. Thank you, Dr. Salwan. I love seeing you, and thank you for all your good work you're doing, and congratulations on the newspaper as well as the TV. Thank you. I appreciate it. Live आज हमारे साथ हैं रिया सिंह जी जो कि वेल नोन कारोप्रैक्टर हैं इस बे एरिया में, काफ़ी अरसे से ये कारोप्रैक्टर का काम करती हैं और बहुत से लोगों को खुश किया है इन्होंने अपने कारोप्रैक्टर के काम से। और पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, लोहड़ी के मौके पे फाइनली हम मिल गए। थैंक यू जी, वेरी वेरी नाइस। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि हम सब मिल के लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो सबको लख बधाइयाँ लोहड़ी की। जी रिया सिंह जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत लंबे अरसे से इस पेशे में हैं, डॉक्टर के पेशे में, तो हमें कुछ टिप्स चाहिए होती हैं क्योंकि जब किसी के साथ चोट लगती है, दिल पे नहीं मतलब वैसे ही चोट लगती है तो ओहो उसका मेरे को चाहिए खाली तो हम ऐसा पूछते हैं कोई जो टिप्स है, जैसे कोई सपोज करो जहाँ फेस्टिवल में आए हुए हैं, यहाँ स्लिप कर जाएं तो उसकी इमीडिएट रेमेडी क्या होती है बिफोर वी गो टू द हॉस्पिटल? फर्स्ट थिंग हमेशा आइस लगानी चाहिए। हम लोगों में हमेशा सेक की फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं। हीट इज़ नॉट सो गुड। 24-48 आवर्स विद आइस लगाने चाहिए। स्पेशली इन जगहों पे अगर चोट लगी तो आइस तो साथ में ही है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जी, हाँ, यहाँ केटरर्स हैं, सब हैं, अब आइस तो मिल सकती है। सो आइस हमेशा करनी चाहिए बिकॉज जो स्वेलिंग हो जाती है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि रिया सिंह जी ने बहुत एफर्ट करके हमारे साथ मिले हैं, सरगम टीवी के साथ, नमस्ते बे एरिया रेडियो के साथ और भारत टुडे न्यूज़पेपर के साथ, और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी इनकी उतनी ही सेवा का फ़ायदा उठाएं। और हमें ये बताइए कि जब चोट लग जाती है तो कितने मतलब जब कोई बोन क्रैक हो जाती है, सपोज करो यहाँ, क्योंकि बहुत मतलब रहता है कि फ्लोर थोड़ी सी वेट हो, अगर हड्डी टूट जाए तो उसका इमीडिएटली क्या होता है? जब लगता है कि हड्डी टूट जाती है वो जगह एकदम नीली हो जाती है और एकदम उसमें ब्रूज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको बिल्कुल हिलाना नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये शक भी होवे कि आपको बिल्कुल स्टिल रहना चाहिए और एम्बुलेंस को कॉल करके सीधा इमरजेंसी रूम जाना चाहिए। फर्स्ट साइन होता है कि एकदम दर्द हो जाता है, सो इट्स नॉट गुड आइडिया टू टेक अ रिस्क। सो इतना कंजर्वेटिव जो आप कर सकते हैं कि पहले इमरजेंसी रूम जाइए, फिर बाद में जब वो सब सेटअप हो जाता है कि यू रूल आउट दिस नो फ्रैक्चर नथिंग, फिर आप घर के इलाज कर सकते हो, कोई और स्पेशलिस्ट के साथ जा सकते हैं, पर इमरजेंसी रूम जाना चाहिए पहले। I know it's not good idea to talk about your chiropractic practice, but एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी लोगों को होती है वो, स्पेशली मेंस को होती है जो बैक पैक होती है, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, उसकी कुछ आप रेमडी से बताइए जो क्विक रेमडीज हैं, जैसे लोग पर्स पीछे रखते हैं, उसकी वजह कौन सी वजह हो सकती है बैक पेन की? That's a very good question. First, the number 2 reason for back pain for men is the wallet in the back pocket. So जो लोग इतना बड़ा चौड़ा पर्स होता है, मैं भी पहले रखता था, पैसों का बड़ा फील्ड होता है, राइट? लेकिन मेरे पास कार्ड होते थे, पैसे नहीं होते थे। कार्ड भी काफ़ी हो सकते हैं, राइट? सो वो जब आप बैक पॉकेट में रखते हो, उसके साथ क्या होता है कि जब आप बैठते हो वो अनइवन हो जाती है आपकी हिप्स। सो दिस इज़ अ नंबर वेरी हाई रीज़न वाई पीपल हैव बैक पेन। सो जब आप निकाल के उसको फ्रंट जेब में डाल दो और साइड में रख लो, बहुत फ़ायदा होएगा आपके लिए, स्पेशली जो ट्रकर्स होते हैं या ड्राइवर्स होते हैं, लॉन्ग ड्राइव जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बैक पॉकेट में कभी भी नहीं डालना चाहिए वॉलेट को।
तो रिया जी मैं बहुत ही खुश हूँ आज आप मिले और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ मिलें, हमारे टेलीविज़न पे एवरी वीक आएँ और रेडियो पे एवरी वीक आएँ और न्यूज़पेपर में मतलब आप अपनी तस्वीर छपवाएँ और अपना एड्रेस वगैरह क्विक टेलीफोन नंबर दे सकते हैं। मेरा ऑफिस फ्रीमॉन्ट में लोकेटेड है 510-557-3197 में और आप www.yourfremont chiropractor में जा सकते हो। दैट्स योर फ्रीमॉन्ट chiropractor। फेसबुक में है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो सोशल मीडिया आपको चाहिए उसमें सब है। बट गूगल में आप देख सकते हैं सिंह chiropractic in Fremont। And thank you very much. I hope you are doing very good like service for the community. इसलिए कि भी मैं आपको बहुत मतलब लाइक करता हूँ क्योंकि आप आगे आके हर एक फंक्शन में जाते हैं, लोगों के दुख तकलीफें पूछते हैं और सुनते हैं। That's a wonderful job you are doing. Thank you. So are you. You're doing such a great job for our community. I hope कि आपके बहुत listeners, viewers सब हों। Thank you. Thank you जी. Happy Lohri. I have Trisha Fox from Aloni College. And hi Trisha Fox, happy Lohri. Happy Lohri, how are you? I'm very fine and very glad to have you again on my TV. And Trisha Fox, So excited to be here today and celebrating Lohri. I would like to first say Happy India Republic Day because it's so important to recognize the accomplishments and the contributions of the Indian Americans. And so also I'm a part of Aloni College. I'm one of the trustees for the last 8 years. Wow. Well, I actually... Congratulations for winning again. Thank you. Thank you so much. And also, I was also the author of pushing for India Republic Day because it's important we recognize that. But also we're on the eve of, I'm also on the U.S. Department of Commerce for the Northern California Trade District Export Council, as well as I'm one of the trade advisors with the Department of Commerce. The important part of all of this is that it's all falling on Martin Luther King weekend, and that we can work together to help make a difference, and that all of us can be drum majors to break down the barriers that keep all of us separate. So this weekend is one that can bring peace, happiness, and togetherness in our community. And I promise that Sargam TV and TV U24, Bharat Today and Namaste Bay Area Radio will be always with you. Let us make it happen. And I really appreciate. I saw you every Indian festival. That's I'm very much honored for that reason too. And let's make it happen now. That's right. We can do it. All of us together, because it's the unity and the community that brings us together with the diversity. So unity and diversity. You have to only do like just shoot me email or we are on Facebook. Just write on Facebook, and you have my personal cell phone too. So just call me. I'll be there. And I want to thank you so much for all that you do, Venator, because it's so important that you're capturing the news. We congratulate you on your first paper that has gone out, and now we're on the second edition. So this is an exciting year for you. Yeah, thank you. Congratulations for all that you do and everybody that's part of your team. Thank you so much. Thank you. I'm very much honored, Trisha Fox. I'm very much honored. Thank you. When you do things for needy souls, we are extremely fortunate, grateful, everyday life, every moment. And when I look at Global Woman Power webpage and what Alkaji and the team has done, I basically said that execution is going to be our focus. We have started doing many things since last year, and this year's program is going to continue. The projects that we would love to have all of your support, that we do share your cake. When it comes to your birthday or your kid's birthday or your family member's birthday, go check out our Global Women Power, what we do, we sponsor cake and goodies for remote villages kids in India. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ U24 ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube, Facebook, Twitter ਅਤੇ WhatsApp ਤੇ। U24 ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ www.u24.live